रिमेम्बर, इस फॉर्म में याद रखोगे तो इजी रहेगा. एक लेटेक्स और एक इन्फ्लोरेसेंस वाली चीज भी याद रखनी है. ओके, वी हैव डन अबाउट hallucinogens आल्सो वेरी क्विकली. टोबैको के बारे में. ओके, व्हाट ड्रग्स, एक वर्ड दिया था मैंने आपको. व्हिच काइंड ऑफ ड्रग्स? साइके, जल्दी बताइए क्या था. साइकेडेलिक. Yes, psychedelic drugs. याद रखना है इस चीज को भी. Psychedelic, which is the most powerful? This we have done. Tobacco. We have done about tobacco. Let's do this. Tobacco has what stuff? Nicotine. Which stimulates which gland? Adrenaline. Adrenaline. To release which two hormones? Adrenaline and noradrenaline. Adrenaline. Yes, ma'am. Yes. Causing two problems: mental depression and नींद नहीं आती. क्या बताया था नाम? Insomnia. 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 So I think this page is okay for everybody. We did this. We did opioids. We did cannabinoids. We did coca alkaloids. We've done hallucinogens. We've done tobacco. Now, effect of tobacco on health. Tobacco chewing has some adverse effects on health. It can induce lung cancer, cancer of urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcers, oral cancer. इतनी सारी परेशानियां. Smoking increases carbon monoxide content in the blood. Anybody who's smoking, in his blood, what increases is the amount of carbon monoxide. Carbon monoxide. So obviously it will reduce the concentration of hemoglobin bound oxygen. Yes, ma'am. Okay. So what will happen? Oxygen deficiency in the body. Very harmful Yes, for ma'am. passive smokers. What are passive smokers? Ma'am, ma'am, those true Ma'am, smoker, indirect. active smoker and passive smoker. Indirectly. Indirectly, ma'am, smoke लेते हैं अंदर उसके लिए. So some other drugs, ये और याद रखने हैं. नाम जल्दी से याद करिए. Barbiturates, ठीक है. Amphetamines, benzodiazepines. These are the three other drugs, similar drugs, which are used as medicines to help patients cope up with illness like depression, insomnia, and are often abused. गलत तरीके से यूज हो जाते हैं बाद में. But normally ये medicine के लिए बने हुए drugs हैं. You need to learn them. Barbiturates, okay, amphetamines, and benzodiazepines. These are medicinal drugs. Reasons for taking drugs and alcohol, इसमें कुछ नहीं है, सब बकवास है. Social and peer pressure, curiosity and need for adventure, excitement, avoid stress, depression, and frustration, overcome hardships, avoid unsupportive or unstable family structure, perception that it is cool or progressive, modern बनने के लिए. This perception is further promoted by TV, movies, newspapers, and internet. It is okay. I don't think इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीजें हैं, बहुत general सी चीजें हैं. But before I go on Yes, to this ma'am. general reading वाला part, I want you to read this. यहाँ तक ये इसमें कुछ नहीं है, बहुत general है, मैं करा देती हूँ. आप ये वाला part revise करिए जल्दी से, especially ये वाला. Name of the 3 drugs which are used as medicines to help patients cope up with mental illness and insomnia. Learn their names and effect of tobacco की 2-4-5 problems learn करिए quickly. Only the first 2 paragraphs are important. Have you read, beta? Who is ready? Ma'am, I have only not done that tobacco part. Me too, Which ma'am. part is not yet done? Ma'am, some Hey, other ma'am, drugs. that previous page, ma'am, a little bit. Tobacco वाला part. अच्छा अच्छा, बेटा स्पेलिंग्स लर्न कर लो. सबसे इम्पोर्टेंट नीचे वाले 3 ड्रग्स की.
So very quickly, we have very few minutes left. Done, ma'am. आज पहले मैंने टेस्ट बोला था लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत कम बच्चे आए। जब मैंने टेस्ट बोल दिया तो और स्ट्रेंथ कम हो गई। सो आज मैं नहीं ले रही हूँ, सरप्राइज के मैम टाइम पे किस लूंगी। चीज का था? हाँ, तो जिनको पता था आज टेस्ट है वो आज आई ही नहीं है, इसलिए मैं सरप्राइज लूंगी अब किसी पे जाए। मैम है किस चीज का? बेटा वो रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट का जहाँ तक रिवाइज करा दिया था, ए सेक्शन पूरा हो गया था, वहां Yes, तक ma'am. का पहला मैंने वाला आपने बोला। मैम ए सेक्शन तक। हाँ, जो पीडीएफ डाली थी वो वाली। There are two basic Okay. parameters which force the person to become addicted to one or the other forms of drugs. Addiction, psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. Temporary feeling of well-being, थोड़ी देर के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है. It makes the person to take up drugs on regular basis even when they are not needed or even when their use becomes self-destructive. The repeated use of drugs and alcohol increases the tolerance level of the receptors present in our body. As a result, क्या होता है, थोड़ी बहुत अमाउंट में तो receptors respond ही नहीं करेंगे. It is only Ma'am, जब dose high वाला dose, लेती है। हाँ, जब हाई डोज या ड्रग्स होगा तब जाके उन पे इफेक्ट आता है। तब तक वो जो पर्सन इफेक्टेड होता है वो एंजॉय नहीं करता है, तो अमाउंट बढ़ती चली जाती है। Drugs are consumed even once can cause addiction and pull the user in a vicious circle leading to a regular abuse. ये नहीं कि एक बार लेने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस, ये हम डिपेंडेंस देख लेते हैं पहले बस आज। लेट्स हैव डिपेंडेंस. It is the tendency of the body to show unpleasant and characteristics withdrawal symptoms. अगर कोई छोड़ने की कोशिश करता है अल्कोहल या ड्रग्स, तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं? एंजाइटी, shakiness, nausea, sweating. Sometimes life-threatening too. Dependency pushes the person away from social norms and leads to social adjustment problems. सबसे अपने आप को isolate कर लेते हैं ऐसे patients क्योंकि वो conscious रहते हैं अपने behavior के लिए, तो वो socially क्या हो जाते हैं? Isolate हो जाते हैं. Effects of drug: reckless behavior, vandalism, violence, heart failure, cerebral hemorrhage, excess drugs, coma, death. एग्रेशन, रिबेलियस बिहेवियर, रिबेलियस मतलब विद्रोही बन जाना, हर बात के लिए नो नो करना, डिप्रेशन, फटीक, फटीक मीन्स जल्दी से थक जाना, विड्रॉल, आइसोलेशन, सबसे अलग हो जाना, deteriorating relationships with family and friends, changes in sleeping pattern, fluctuations in weight, appetite, lack of personal hygiene, drop in academic performance of students, absence from schools, colleges, loss of interest in hobbies. ये तो बेटा immediate effects हैं, immediate पता चल जाता है, दिख जाता है, लेकिन far reaching implications भी होते हैं इसकी. Habit of stealing or not getting money to buy drugs, mental and financial distress, family and friends, alcohol use in adolescence may lead to heavy drinking in adulthood. Chronic use damages the nervous system, causes liver cirrhosis, liver damage होना ही होना है. Higher risk of infections like AIDS and hepatitis, which transmits through sharing of infected needles, syringes or sexual contact. So normally when they are in such company, they opt for these kind of things, same needles are being shared, and उससे और problems start हो जाती हैं like AIDS and hepatitis. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to have adverse effects on the fetus. Sports persons take up certain drugs, steroids, to enhance their performance. इससे temporary muscle strength तो बढ़ जाती है, उनका performance बढ़ जाता है. These steroids have many side effects, जो या तो permanent हो सकते हैं. In adolescents, severe facial and body acne, premature closure of growth centers of the long bone may result in stunted growth. अगर कम एज से कोई ड्रग लेना स्टार्ट कर देता है तो हाइट, वेट, सब कुछ. Revise this. It is your break time now, so I will not pull it further. Just revise this much. Okay, children. See you later. God bless. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's your break time. Thank you, ma'am. Okay. Bye, bye, bye. God bless. Bye, ma'am.